Honorable members, आज विपक्ष का नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 80वां जन्मदिन है। 80वां जन्मदिन। सदन प्लीज शांति। नहीं, पैदा होते होते कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे बात। और 80th birthday of Sri Mallikarjun Kharge ji, on behalf of the entire house, I greet him and convey best wishes. And also one more member, Sri Joginapalli Santosh Kumar, is there in the house. Santosh is one of the youngest members from Telangana, and I convey best wishes to him also on behalf of the house. And then oath or affirmation, Secretary General. Nominated Dr. Dharmasthal Viren Hegde. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ರಮೇಶ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Business. No play cards, no articles. I have to name those people. I asked एक बुलेटिन में जो लोग ये प्ले कार्ड्स लाया उसके बारे में जिक्र करना चाहिए और आपत्तिजनक है ऐसा चेयरमैन ने कहा। इस The house is adjourned to meet at 12 o'clock. श्री नीरज शेखर जी, दिस इज क्वेश्चन आवर, नथिंग, सिर्फ क्वेश्चन आवर पर ही बहस होगी। क्वेश्चन आवर माननीय नीरज शेखर जी, नथिंग एक्स्ट्रा मोर निकॉल। माननीय संजय सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग नियत कृपया वापस जाए, अपनी सीट पर बैठे। इस तरह प्ले कार्ड लेकर के रोल में आना संसदीय ढंग से अनुकूल सही नहीं है। प्लीज अपनी सीट पर जाए। आप बोले क्वेश्चन माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 46 फर्स्ट सप्लीमेंट्री। पेंडेंसी खत्म करने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कानून रखा, एक प्रस्ताव रखा था। प्लीज नो प्ले कार्ड, नो बैनर, गो टू योर सीट्स, गो टू योर सीट्स। 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। ये राज्यसभा के नियमों के अनुकूल है। प्लीज वो केस ज्यादा लंबा ना चले, 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। क्या ये जो प्रस्ताव है उसको लागू किया जा रहा है और उससे क्या क्या फायदे हुए? माननीय मंत्री जी, सेकंड सप्लीमेंट्री, दूसरा सप्लीमेंट्री सर कि
बहुत सारे केसेस हैं सर, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और ये बताया गया है कि 2047 तक सारी टेंडेंसी खत्म होगी। तो सरकार क्या कर रही है इन टेंडेंसीज को जल्दी खत्म करने के लिए? एक केस अगर 30-35 साल चलेगा, किसी गरीब आदमी का केस 35 साल चलेगा तो उसको बड़ा खर्च होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इसको समय कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी, जहाँ तक पेंडेंसी खत्म करने के मामले में है, उस मामले को इस विषय में सीट में निपटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेगोशिएशन 2018 लाई है। 20 अप्रैल 2000 को अधीनस्थ उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय को खोलने का काम किया है। स्पेशल रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट को लाई है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन सरकार 2019 को लाई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा ध्यान दिया गया है और ई कोर्ट खोले जा रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट खोले जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना जा रहा है, लोक अदालतों के माध्यम से बहुत से केस को निपटाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और फास्टो कोर्ट के द्वारा भी शीघ्र मामलों को निपटाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। हालांकि सरकार वाद नहीं कर सकती है जुडिशरी को, लेकिन फिर भी एडवाइजरी करती रहती है और इस मामले में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य का क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है। इसी हाउस ने पहले संकल्प लिया है कि क्वेश्चन और कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो भी सदस्य माननीय बोल में है और प्ले कार्ड लेकर आए हैं वो गलत है, वो वापस अपनी सीट पर जाएं। ये संसदीय इटिकेट्स और संसदीय नियम और मर्यादाएं जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अगेंस्ट, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रामनाथ ठाकुर जी, आपका सवाल। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जिन गरीब लोगों को जेल में बंद है उनका बेल हो चुका है, लेकिन गरीबी के कारण बेल नहीं भर सकते हैं, जेल सरकार यहाँ करना चाहती है अथवा नहीं करना चाहती है, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति नालसा के द्वारा और सांसा के द्वारा जो विधिक प्राधिकरण है और तालुका विधिक प्राधिकरण के द्वारा, उसके द्वारा हम लोग गरीब लोगों को विधिक सहायता देते हैं। प्रो बोनो स्कीम के द्वारा भी सहायता देते हैं, न्याय बंधु के द्वारा भी सहायता की जाती है। शांति रखो, शांति। माननीय कनक मेघला रविंद्र कुमार जी। With regard to improving infrastructure for judicial officers in the district courts and subordinate courts, the Honorable Chief Justice of India suggested Judicial Infrastructure Corporation has to be established for the purpose of judicial infrastructure. What is the क्वेश्चन आंसर के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। At what stage the proposal made by the Honorable Chief Justice of India with regard to infrastructure corporation? आंसर प्लीज। दोबारा रिपीट करें। The proposal made by the Honorable Chief Justice with regard to the judicial infrastructure corporation, whether it is under the consideration of the government, is there any proposal to judicial infrastructure corporation? जैसे माननीय सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में जिक्र किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक पत्र में लिखा मुझे, और हाल में जो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें भी व्यापक रूप से इस चीज का हम लोग अध्ययन किया, चर्चा की और ये निर्णय किया कि जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के देखरेख में एक समिति बनाएंगे। हमने सहमति दी है कि
कि स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बीच में तालमेल रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा रूप देने में काम आएगा। ये तालमेल का विषय है, तो हमने ये स्वीकृति दी है कि स्टेट लेवल में कमेटी बनाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम साथ दे रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से कई स्कीम हमने ऑनरी के लिए सब उदाहरण पर एक आपको मैं बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा और सदन को भी अच्छा लगेगा। सर 2014 तक 93 से 2014 देश में टोटल हम लोग का जो कोर्स वो है 15,818 टोटल कोर्ट हाउस 15,818 और हमने 5 साल के अंदर में इसको टोटल इंक्रीज कराया है 20,993 सर टोटल रेसिडेंशियल यूनिट 2014 तक 10,211 बढ़ाया था और हमने अभी 22 तक में 8 साल के अंदर में 18,502 यूनिट हमने बढ़ाया है। ये हमारा सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में जुडिशरी के प्रति मजबूत लाने के लिए, सहूलत देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारे कमिटमेंट है। माननीय सदस्यगण, ये क्वेश्चन आवर सदस्यों का है, आप सबका है। इसकी तैयारी में कितना समय लगता है आप जानते हैं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मुझे पास में रखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके माध्यम से मंत्रियों से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जवाब इन्होंने दिया है सबसे अधिक बात पेंडिंग है और जल्दी बातों का निपटारा हो, इसके लिए आवश्यक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ स्थापित की जाए। इसके बारे में क्या कार्रवाई करने जा रही है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का विषय है। उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना और उच्चतम न्यायालय द्वारा 2000 के WPC संख्या 379 में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से जुड़े व्यय और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होती है। कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करने के बाद की जाती है। प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें उच्च न्यायालय के आज के प्रशासन की देखभाल करने की आवश्यकता होती है और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठ के अलावा अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए अनुरोध विभिन्न संगठनों से समय समय पर प्राप्त हुआ है। हालांकि वर्तमान सरकार के पास कोई पूरा प्रस्ताव नहीं है। देश उच्च न्यायालय उनकी खंड न्यायपीठों और क्षेत्राधिकार का निर्णय जो है उत्तर में हम थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 47 डॉक्टर अमर पटनायक। डॉक्टर माननीय मंत्री फर्स्ट सप्लीमेंट्री First established in the year 2008, it encompasses 8 missions in the areas of solar energy, energy efficiency and forestry sector, which are linked to the reduction in carbon emissions. What has been the headline of this mission to regulate organizations from increasing their carbon emissions by imposing specified penalties? माननीय उपसभापति महोदय, सरकार के द्वारा ग्लासगो में जो COP26 हुआ था उसमें जो पंचामृत की घोषणा की गई थी वो वास्तव में भारत का कार्बन एमिशन को कम करने का जो संकल्प और प्रयास है उसको दर्शाता है। मुझे इस सदन को बताते हुए कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन एमिशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसके साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन एमिशन को कम करने के जो संकल्प किए उसको पूरा कर रहे हैं। अभी जो NDC भारत के द्वारा जो COP26 घोषित किए गए हैं उसको लेकर के सरकार के द्वारा एक व्यापक नीति बनाई गई है।
विशेष रूप से रिन्यूएबल के क्षेत्र में सरकार के द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और उसके अंतर्गत निवेश के साथ ही साथ इसमें किस प्रकार का शोध चाहिए उसके लिए भी सरकार के द्वारा विशेष नीतियां बनाई गई है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। Thank you, Honorable Minister, for a very detailed reply and an assurance. My second question is, can the government consider introducing carbon audits or carbon emission audits in private sector companies or even government companies so that we can get a figure as to what is happening in the field? Thank you so much. जहाँ तक अर्बन फॉरेस्ट की बात है, हमारे वन मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को शुरू किया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में हम नगरीय वन का विस्तार कर सकें। मैं सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत स्वीडन के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्तर पर एक फोरम लीड IT का गठन किया गया है। विशेष रूप से वो क्षेत्र जो हार्ड टू अवेयर इंडस्ट्री है, जैसे एल्यूमिनियम का क्षेत्र है, सीमेंट का क्षेत्र है, स्टील का क्षेत्र है, जहाँ पर कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। इस इनोवेशन के साथ भारत अपने देश में भी और दुनिया के क्षेत्रों में भी हार्ड टू अवेयर सेक्टर में कार्बन एमिशन कैसे कम हो इसके लिए प्रयास कर रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 48 and 50 both are similar nature, we take it together. Question number 48 डॉक्टर अमीर आपने माननीय मंत्री ने उत्तर सदन के पटल पर क्वेश्चन नंबर 50 श्री केसी वेणुगोपाल मंत्री जी, सभापति महोदय उत्तर सदन के पटल पर रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, श्री जीवीएल नरसिम्हा राव। के लिए लिए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करें, अवगत कराएं। महोदय, भारत में रोजगार के आकलन की दृष्टि से नियमित रूप से PLFS का सर्वे किया जाता है। PLF के सर्वे के माध्यम से देश में ये देखा जाता है कि देश में उपलब्ध कार्यबल से कितना कार्यबल को कार्य मिला है। और मैं आपके सदन के सामने PLFS के जो 2017, 18, 19 और 19-20 और 20-21 के आंकड़े रखना चाहता हूं, जो ये बताते हैं कि भारत में कार्यबलों को रोजगार की उपलब्धता हुई है। उसके साथ ही साथ भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा 21 का सर्वे किया जाता है, जिस 21 के सर्वे के अंतर्गत संस्थागत क्षेत्रों में जो रोजगार है उस संस्थागत क्षेत्र के रोजगारों को किस प्रकार से बढ़ावा है उसको देने का पूरा विषय रखा गया। उन आंकड़ों को भी मैं सदन के समक्ष रखता हूँ। भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर जो रोजगार परिदृश्य है वो ये दिखाते हैं कि हमारे देश में जो PF है, PF की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में मई में जो PF के आंकड़े आए हैं वो भी इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार के पेरोल में वृद्धि हुई है। जहाँ तक रोजगार बढ़ाने के उपायों का विषय है, भारत सरकार के द्वारा संस्थागत क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, PMT स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय
शिक्षित प्रोत्साहन योजना उत्पादन से जुड़ी हुई परियोजना विशेष रूप से क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और पर ही चर्चा होगी। चल रही है उसमें भी रोजगार वृद्धि का कार्य किया है। थैंक यू। ऑनरेबल थम्बी दुरेगी on question number 48. Supplementary. I am very happy that Honorable Minister has assured, Honorable our Prime Minister has taken many steps to create employment opportunities. At the same time, sir, I want to know from the Honorable Minister, Manrega program. In the Manrega program, there are many places where people they are not able to get their wages at the proper time. Therefore, whether the government is come forward to see that what are the grievances in rural area, the employment opportunities where the women are suffering, whether it will come forward and find out the solution for that, really to pay for them. That I want to know, sir. माननीय उपसभापति महोदय, सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान भी अतिरिक्त रोजगार दिवसों का सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन का कार्य किया गया है। अगर माननीय सदस्य महोदय के पास कोई ऐसी कोई विशेष शिकायत है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में लाए, संबंधित मंत्रालय को उसका संज्ञान दिलाया जाए। No supplementary on question number 50. No supplementary on question number 50. Question number 49. Shri KN Rajesh Kumar. KN Rajesh Kumar. माननीय मंत्री जी। Mr. Rakesh Sinha. Mr. Rakesh Sinha. Supplementary. जो ऐसे एजेंट्स काम कर रहे हैं और एजेंसियां काम कर रही हैं उनको ब्लैक लिस्टेड चलते क्या सरकार अखबारों में इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है उसकी सूचना आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है तो वो फिर दूसरे लोग उसके चंदे में फंसते हैं। दूसरा इसी से जुड़ी हुई बात है, क्या सरकार अपनी एजेंसियों को राज्यों में इकाई खोलेगी जिससे कि जो बाहर जाने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको एजेंसियों के द्वारा ही बाहर भेजा जाए। यदि ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तो शायद हम अपने नौजवानों को, छात्रों को बचा पाएंगे इन फेक एजेंसियों और एजेंटों से। धन्यवाद। Sir, through you, I would like to inform the honourable member that we are taking a number of steps to ensure that recruiting agents are not misusing their powers. We have instituted very strict measures where we discover it. We have also liberalized the entire RA scheme so that there are more locally based recruiting agents which will lead to more responsible behavior as well. So where we do find that there are recruiting scams or any illegal activities, we will crack down on it. But I would also like to assure the members that we are planning to bring a new immigration bill which will take into account a lot of digital tracking that we have been able to do in the last few years. So that will ensure that there is less breaching of the law in regard to immigration and recruitment. Your supplementary. माननीय उप सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँ कि विदेशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में क्या कमी आई है, अगर आई है तो उसके कारण क्या है, क्या सरकार को ऐसा प्रयास करेगी कि भारतीय युवाओं को विदेशों में मिलने वाले जो अवसर हैं उनमें के जो कमी है उसे दूर किया जा सके। Through you, I would like to assure the honourable member that we are negotiating a number of agreements with foreign countries which will make it easier for our young people, especially our students, to find more work opportunities. Particularly after Prime Minister Narendra Modi has come to power, a number of migration and mobility agreements have been signed. Most recent one was a letter of intent that we have done with Germany. We have done with Australia. We have signed new agreements with Portugal, with UK, with France. We have an updated agreement with Denmark. So
also in the developed world, there are many more opportunities for our young people. With regard to the countries of the Gulf, we have again strengthened our protection for workers, for opportunities, and even during the COVID, we have, through political contacts, we have ensured that the layoffs have been minimized and the return to work has been possible. क्वेश्चन नंबर 51 माननीय प्रियंका जी प्लीज आप सवाल पूछे Sir, you have to bring the house in order, sir. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब वापस जाए माननीय प्रियंका जी को पूछने दीजिए आई कैन रिक्वेस्ट ओनली मेंबर्स प्रियंका जी यू नो माय लिमिटेशन आप रिक्वेस्टेड फॉर प्लीज Sir, but it doesn't limit you from talking around the fact news stories of the GST, sir. The question is the same, sir. You put your question. आप प्लीज आप गलत कर रहे हैं संजय जी प्लीज वापस आइए नो ये रूल नहीं है प्लीज नो आप प्रियंका जी पूछिए सर प्लीज महंगाई पर चर्चा कराइए सर महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए सदन में सर आप पूछिए प्रियंका जी पूछिए सर मैं भी संजय सिंह की बात से इत्तेफाक रखती हूँ महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए अडानी की गुलामी कर रही है आप पूछिए सर एमएसपी कमेटी में पंजाब के लोगों को नहीं रखा सर पंजाब के लोगों के साथ आप सवाल पूछिए एमएसपी कमेटी मेरा भी सवाल ये है मौका दे रहे किसानों को कि जो बढ़ती महंगाई है ये आप से संबंधित नहीं है सब महंगाई वापस लो जीएसटी वापस लो नो सप्लीमेंट्री अडानी की गुलामी बंद करो I'm moving to question number 52 श्री दीपक प्रकाश माननीय मंत्री जी पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद माननीय मंत्री पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद पूंजीपतियों की गुलाम सप्लीमेंट्री पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मैं आग्रह करता हूँ प्लीज अपने भेल में जहाँ खड़े होकर हाउस को डिस्टर्ब करें माननीय संजय सिंह जी अपनी सीट पर जाए वापस जाए प्लीज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद प्लीज मोदी सरकार हार अडानी की गुलामी बंद करो for 10 minutes house adjourned for 10 minutes Papers to be laid on the table. Sri Dr. Kausal Kishore, Sri Kausal Kishore.
आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। So we will take up now the weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition and unlawful activities amendment bill 2022. Honorable members, you all know this is very important bill and it has got international commitment and implication, and this is related to the defense. So last 3 days you have been given opportunity to participate in this bill. So I request all of you to go to your seat and participate in the discussion of this bill. So Sri P. Wilson. Chairman, sir. Let him speak. The honorable member wants to speak. Please go to your seat. Let him speak. Yes, Mr. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, point of order, sir. Now, Sir, Point of order. Excuse me, Mr. sir, point of order, sir. Under what rule? 258. 258. 258 is a general rule. Yes. So you tell me the specific thing in the rule. Under what rule you want to raise? 258 is a general rule. Sir, I can raise a point of order under Rule 258. You also know that, I also know that. But other members will have to sit. I will make my submission, then you... Without your sitting, I cannot hear him. I will make... Go to your seat. What is your seat? Is it your seat? No seat for No, everybody. no, then No, not allowed. seats are not allotted. That doesn't mean this is reserved for the senior members. These are reserved for the senior members. Yeah, please. Sir, morning when I raised the point of order, it was said during question hour, so I agreed to that. But during question hour, contrary, instead of replying to the questions, ministers were replying, accusing the members, that was allowed. But now, sir, they made a statement other than replying to the question, that we have to make a submission that, sir, the chair should have taken note of that. Anything made by the minister other than the question has to be explained, number one. Number two, sir, we all have DMK, Aam Aadmi, TRS, CPM, everyone has given a notice under 267. That has been decided on. Please. That is under the consideration of chairman, and chairman has rejected it. 1 minute, only 1 minute, only 1 minute. The issue was that we want to discuss suspending the proceedings, the issue of the price rise on petroleum products, and said no ruling was given, sir. No ruling was given, but the business is being taken. I think you are going out of the rule, and out of the issue. 1 minute, in sir. question hour, you Sir, cannot kindly. raise point of order. That is the rule. You cannot do that. Let me conclude. So your 1 minute is over. I will conclude. And the point of order, if there is any substance, I am going to shoot. Mr. Wilson. 1 minute. Mr. Wilson. You asked for 1 minute. I have given you 1 minute. Please. Mr. Wilson. Mr. Wilson, please. yes, sir. Don't disturb the member. Please do not disturb the member. Mr. Wilson. Yes, sir. Thank you. You can carry on. Thank you, Deputy Chairman, sir. Today, Unless you give a ruling on it, what he's saying is the ruling is not given. So if the proceeding cannot proceed unless the ruling comes from the... That has already been decided in the beginning of the House, commencing of the House on that point. So that point remains. Mr. Wilson. thank you, Deputy Chairman, sir. Today, what is the weapon of mass destruction in this country? It cannot go on Honorable Minister. unlimited times. You participate in the discussion. If there is relevant point, you can raise it. Mr. Wilson. Continuing the proceedings. Thank you, Deputy Chairman, sir. Today, what is the weapon of mass destruction in this country? Honorable Minister, Mr. Wilson, please carry on. Honorable Minister, can you tell the people of this great nation, it's the price rise of essential commodities like gas, milk, pulses, sugar, edible oils, tea, food, grains, petrol, diesel, how the government is going to control that and handle it? Price rise affects the poor and the common man. The salaries and wages are remaining the same, but the prices are soaring up.
the prices of That condiments and is not the spices. subject of the bill, Mr. Wilson. I will come back to Let's come the. to the bill. I'm coming to the Come bill. straight to the bill. Let him speak, Please sir. don't. That is Please what. don't. That Let is. him speak. Please don't derail the discussion I'm of not this bill. I'm not This is a derailing. very important bill. It is an with important bill. international We are walking implications out, sir. and we are it is a matter of importance for the defense of the country. So please, Yes. please you speak on the subject I'm- and don't go out of the I'm subject. not going- which I will not allow. Kindly, I am not going out of the subject. I am only on the issue. Today, what is a weapon of mass destruction in this country? I am asking the Honourable Minister, please tell the people what is the weapon of mass destruction. The weapon of mass destruction in this country is the price rise. It affects all the common man. And it affects the poor man. I think, I'm so sorry. And it affects even the middle class. Subject is different and the bill is different. If you do not want to speak, you can conclude your speech. Sir, Please. that is what, sir. Sir, therefore, sir, that is what we have given notice. Sir, let's debate on this issue first. We will go on to the discussion of the amendment bill later. This issue of price rise is very important. It No, affects this every is not the common subject. man. Nothing will go on record. Sir, this is a. Nothing will go on Sir, this- record. If you speak on the bill, that Sir, will only go Sir, on record. I'm only speaking. Nothing will go on record. Sir, I'm only speaking. Thank you. Sir, I'm only speaking on the weapon of mass destruction. Sir, according to you, weapon of mass destruction is not the chemical and other things. It is about the price rise. It is written, I think you are misguided. Please, I'm please not read the bill. misguided. Please read the bill. I- What is weapon of mass Sir, destruction? sir, So, please, Deputy Chairman, if you sir. want to speak on that, Sir, you can speak sir, or you can conclude. Sir, Thank you. Sir, sir, I'm speaking on this. Sir, we are only concentrating on, sir, what is the weapon of mass destruction in this country. The weapon of the mass destruction in this country. I think you are not interested, Mr. Wilson. no, sir, You are not very interested in this bill. Sir, I'm You are talking- speaking on something Sir, I'm else. talking I am about calling the people- next speaker. I am the calling the people next of- speaker. Sir, I'm talking about the people of this country. So Sir, you the must next protect the speaker people. is Then go on Dr. to the other Prasanta things. Nanda. Mr. Prasanta Nanda, please. Thank you, Deputy Chairman, sir. जा सकते क्या? This is a bill concerning the security of this country, and this amendment bill has been passed in Lok Sabha in April, and this bill, moved by Honorable External Minister Sri Rajyasabha ji, amends the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System Act 2005. 2005 Act prohibits unlawful activities such as manufacturing, transport or transfer related to weapons of mass destruction and their means of delivery. Sir, weapons of mass destruction are biological, chemical or nuclear weapons of mass destruction and their delivery system. This amendment is to prevent persons from financing such activities. The central government may freeze, seize or attack their funds, financial assets or economic resources, whether owned, held or controlled directly or indirectly. The key features of this amendment is what I would like to little elaborate. That is, the weapons of mass destruction and their delivery systems seeks to ban funding of weapons of mass destruction and also empower this center to freeze and seize or attach financial assets and economic resources of people engaged in such activities. Then the bill inserts a new provision stating that no person shall finance any activity which is prohibited under this Act or under the United Nations Security Council Act 1947 or any other relevant act for the time being in force or by an order issued under any such act in relation to weapon of mass destruction and their delivery systems. So the punitive measures which has been given in this is it aims to give the government the powers to freeze, seize and attach funds or other financial assets or economic resources owned or controlled wholly or jointly, directly or indirectly by such person or held by
or on behalf of or at the direction of such person or derived or generated from the fund or other assets owned or controlled directly or indirectly by such persons. The financial sanction which has been mentioned in this, that it empowers the government to prohibit making available funds, financial assets or economic resources for any prohibited activity in relation to weapons of mass destruction and their delivery system. Sir, passing of this bill will strengthen the country's global position and specific changes in the earlier law, which was necessary so that security of the country can be ensured. Upgrading a law which was 17 years old was necessary, and thus it has come to this House for consideration and passing, sir. Many other countries in this world have such legislations. Current requirement needs specific law and legal statutory ways to deal with the issue of national security. Sir, therefore, I support this bill, and I think that this amendment is absolutely necessary. Thank you. Thank you, Mr. Nanda. The next speaker is Ayodhya Ramireddy Allah. Thank you, sir, for giving me the opportunity to share a few of our thoughts on the proposed amendments to the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Act 2005. There haven't been any amendments to the Act in the last 16 years of its inception, and I appreciate the introduction of such an important piece of legislation in the Parliament. I would like to share a few of my observations regarding the measures taken by the Centre in this regard. The first point, India has remained on the forefront in matters of disarmament and reiterated the belief that nuclear weapons, which should be abolished in a step-by-step, non-discriminatory process, which is echoed in the bill. Having committed to the policy of no first use since 2003, we have repeatedly stated the use of nuclear weapons would be of punitive retaliation in case of an attack. This bill also promotes our global efforts towards disarmament and strengthening the non-proliferation order, like supporting the Conference of Disarmament for negotiations on an international convention prohibiting the use or threat of use of nuclear weapons and steps to reduce the risks associated. The second point, the United Nations Security Council's Resolution 1540 prevents individuals and organizations, including terrorist groups, from acquiring and spreading nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery, while imposing obligations on all states regardless of their participation in existing treaties. India has fought a battle against terrorism for many decades. Thus, I wish to again draw the attention to the dangers of proliferation of weapons of mass destruction, as reiterated by our representatives at UNSC, and request the international community to prevent possession and use of weapons of mass destruction by terrorist outfits as per the UNSC recommendations. Next point is on biological weapons, the new threat. We have repeatedly emphasized on following the Biological and Toxin Weapons Convention and pitched for strict compliance on banning production of the entire range of biological weapons of mass destruction. In the recent past, we have seen the widespread effects of the COVID-19 pandemic, with the reports indicating that coronavirus was manufactured in Wuhan Institute of Virology as a bioweapon to mobilize biological warfare, posing it to be dangerous as its nuclear or chemical counterparts. Such looming threats are a real threat, and though our armed forces are trained to prepare for chemical, biological, radiological and nuclear attacks, more efforts ought to be considered. An Apex Center for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Emergencies needs to be established on a priority basis, and collaborative training exercises for our forces by institutions engaged in this field could be beneficial to make our first responders to crisis truly first class. Our enhanced international cooperation in science and technology needs to be talked here.
There is a need for international cooperation now more than ever to counter the matters relating to the weapons of mass destruction, especially in times of fast developing technology. Efforts for promotion of peaceful use of science and technology through technology transfer, sharing of information and exchange of equipment are being encouraged by India, as indicated in the UNGA resolution on role of science and technology in the context of international security and disarmament. And these efforts could be augmented by facilitating multilateral dialogues along with relevant stakeholders on current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts. The next point is on increasing criminal liability. In the 2005 Act, for aiding non-state actors or terrorists and violation of other provisions of the Act, there is no mention of an amount which would be liable as a fine. Unauthorized exports of weapons of mass destruction are punishable with fines ranging from 3 lakh rupees to 20 lakh rupees, and only a repeat offence result in imprisonment for a 6-month period, extendable up to 5 years. Offenders convicted under the Act often have strong financial backing, and such an amount is minuscule in comparison. Therefore, I urge the Centre to levy more severe fines and enforcement on the convicted offenders. I commend the efforts made by the Centre to contribute to elimination of weapons of mass destruction and implementing crucial steps to ensure their effective control. This bill is a step forward to counter the threat posed by these weapons, and we from YSR Congress Party support this bill. Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Manoj Kumar Jha. Mr. Jha, the floor is yours. Thank you so very much, sir. Very pleased to see you there. We make a great combination, as the history shows. So I'll speak on the bill and I'll speak through the bill. Please protect me and allow me. So first, before I speak on the bill, I'll draw your attention, sir, to the Hindi title of the bill. I'll urge the minister, sir, please make sure that the Hindi we do for the bills, actually they are understandable for the common people. Now, weapon of mass destruction. Secretary General will take note of it. Yeah. But, for instance, proliferation, paridan, I mean, I think it doesn't go down well. So, I know this bill is in accordance to international commitment. Fully agree with that. But important is, sir, we have international commitment in different other areas and realms. Indigenous population, labor, there we remain silent. I have no qualms, no disagreement. Please go ahead with this bill. But please also look at the commitments we have pending. हिंदी में भी आता हूं अभी. सर, साउथ के लोगों का बड़ा डिमांड रहता है, तो मैं बैलेंस कर रहा हूं. तो सर, इसको कहते हैं वेपन ऑफ डिस्ट्रैक्शन. Please carry on. Please carry on. So anyway, so identification of proliferation activities. I think this is one area where the bill is quite positive. Comprehensive legal measures have been envisaged. That's understandable. So we still remember when we talk about this bill, एंथ्रैक्स वाला पूरा जो मामला यूएस का था, और इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं जहां पोस्टल डिपार्टमेंट को लिफाफे में इस तरह की चीजें पहुंचाई जा रही थी, जिससे मेरी चिंता माननीय मंत्री महोदय एक विषय पे खास तौर पे है. क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो हमारी ढुलमुल नीति है, हम क्रिप्टो को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन आमदनी को टैक्स करते हैं. सर, अभी से आपने घड़ी देखना शुरू कर दिया. आप सर मुझको देखिए, घड़ी को मत देखिए. जी सर. हाँ. वैसे भी सर विपक्ष के लिए अच्छी घड़ी नहीं है, तो आप कम से कम घड़ी ना देखें. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर, खास करके पास्ट सेंचुरी सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हम लोगों के लिए दिक्कत है, और जाहिर तौर पर हमारा मुल्क कई मामलों में बहुत वल्नरेबल है. तो हम एक काम, खास करके मैंने क्रिप्टो वाली जो बात कही थी, उसके पीछे वजह ये थी सर कि एनोनिमस ट्रांजैक्शन है सर. कहीं इसका इस्तेमाल फाइनेंसिंग में तो नहीं होता.
उसको फनल करने के लिए, चैनल करने के लिए, चोक करने के लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें कोई पुख्ता व्यवस्था है। सर, मेरा मानना है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर बात करें, वेपन ऑफ मास डिसरप्शन पर भी बात। दुनिया हिल रही है, हमारा मुल्क भी हिल रहा है, सिर्फ इस तरह के हथियार और आयुध से नहीं। दुनिया हिल रही है कि एक प्रकार का जहर घोला जा रहा है दुनिया में और हमारे समाज में भी। वो जहर वातावरण में है सर, और उस जहर का असर ये हो रहा है कि हमारे आपसी रिश्ते शत्रुता में तब्दील हो गए हैं। हम अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, हम राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर in ideological competition, political competition for have a greater footprint। लेकिन अगर शत्रुता की जुबान से बात होगी ना सर, तो समाज छत विच्छत हो रहा है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। चिंता अगर नहीं होगी तो ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये बिल पास होगा सर, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन एंड वेपन ऑफ मास डिसरप्शन जो हम अपने पूरे समाज में देख रहे हैं, खास तौर पर आजादी के 75वें वर्ष में, जहां आप बैठे हैं, आपके ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। ये गांधी, नेहरू, बाबा साहब लोहिया का मुल्क है। हमने क्या बना दिया है सर? बौनी समझ, बौनी चिंतन। हम इस बिल के पक्ष में, लेकिन सर क्या इस तरह का एक बिल नहीं आना चाहिए कि वेपन ऑफ मास डिसरप्शन और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, जिसके माध्यम से हमारी प्राथमिकताएं खत्म की जा रही हैं, उस पर एक चर्चा हो। मैं इस बिल के पक्ष में हूं। सिवाय इसके माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इंटरनेशनल कमिटमेंट की जब बात हो, आप रसूखदार मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, आप अपने रसूख का इस्तेमाल कीजिए और श्रम को लेकर के, श्रम और पूंजी के बीच का जो अनइवन रिलेशनशिप है, उसमें भी इंटरवीन करिए। और जोर से जय हिंद, जिंदाबाद सर। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर झा। द नेक्स्ट स्पीकर इज विकास रंजन भट्टाचार्य। नॉट प्रेजेंट। द नेक्स्ट स्पीकर इज रामनाथ ठाकुर जी। श्रद्धेय पीठासीन उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। यूपीए की सरकार ने इसको लाया था। इसको संशोधित करते हुए वर्तमान सरकार ने आम जनता के लिए यह संशोधन बिल पेश हुआ है। इस विधेयक की मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम। यह वाक्य संसद के प्रवेश कक्ष में अंकित है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। इस भावना से विधेयक उन सभी विनाशकारी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। महोदय, हम यह सदन ये अपेक्षा करता है कि इस बिल के महत्व को देखते हुए जो आतंकवादियों द्वारा हथियारों का जो सप्लाई है, इस पर भारत सरकार निश्चित रूप से रोक लगाने का काम करेगी और धरती को और समाज को बचाने का काम करेगी। यह बिल जो अभी समय में लोगों के बीच में जा रहे हैं, आ रहे हैं और समाज डरा हुआ है, इस डर की भावना को भगाने के लिए यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद ठाकुर जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज के रविंद्र कुमार। Honorable Deputy Chairman, sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the consideration and passing an important piece of legislation for the welfare of the humankind. Sir, I am here wholeheartedly to support the bill. The bill is aimed to insert certain provisions in the Principal Act to prohibit financing any activity in relation to weapons
and of mass destruction and their delivery system. Sir, the Principal Act covers unlawful activities relating to biological, chemical and nuclear weapons and their delivery system and provides for integrated legal measures to exercise controls over the export materials, equipment and technologies in relation to weapons of mass destruction and their delivery system, and for prevention of their transfer to non-state actors of terrorists. So the biological, chemical and nuclear weapons are severe threat to the humankind. In this perspective, a question assumes significance. Are we prepared for a full-fledged biological, chemical and nuclear warfare? I wish to know from the Honourable Minister what is the mechanism that have been put in the place of to face such warfare. I also urge the government to constitute a group of ministers consisting of the health and family, welfare, defence, chemicals and fertilizers and external affairs to draw them and implement national level plan to confront and counter any possible biological, chemical and nuclear warfare. Sir, everybody is aware that when there is a first phase of COVID-19 pandemic across the world, everybody felt and believed it is a biological warfare and the COVID-19 virus was released from a lab in a country. Though the possibility of such things could not be avoided, we must be very careful and cautious for forcing such things. Sir, this is, and there is a section possibility there. I would like to know from whether the provisions of the original act were not sufficient to deal with this subject also. I would like to quote section 15 of the original act, and it says a punishment for aiding non-state actor or terrorist. Already existing provisions in the original act itself is very clear, but I can understand there is no provision to seize the property. But at the same time, the punishment and other steps are already taken care of. Finally, I am fully with the Honourable Minister and the government ruthlessly crush the financing and any activity which even to any remote possibility is trying to help and activity to prepare or produce or help making weapons and mass destruction. But I just wish to seek one clarification in the pursuit of the Indian national interest and for more benevolent use of such technologies. Scientific research must have been taking place on such technologies. So I request Honourable Minister to simply clarify that the government is done to ensure such critical research on such technologies is not impeded even unintentionally due to this legislation. Sir, in view of this, I finally, with these words and cautions and certain steps is requested to the government, and once again I extend my support to the bill. Thank you, sir. Thank you very much. The next speaker is Sri Vaiko, not present. Dr. Fauzia Khan, not present. Sri Ramji, not present. So the next speaker is Dr. M. Tanvidurai. Thank you, Vice Chairman, sir. So as our friend just now is said about the universal and the one family like that. There is a word, our Tamil also, Yadum Ure Yavarum Keli. That is the famous word. 2,000, 3,000 years before, our Tamil people said, the whole world is ours. We are all brothers. We must not discriminate and take weapons to kill other people. That basically universally that friendship is more important. The humanity consists that also very important. That is our slogan. That is our India. India is the philosophical country and which is always advocating the human rights and the humans their democratic system, and that in that circumstances already these weapons of mass destruction and their delivery system prohibition unlawful act amendment bill 2022 was introduced in the Lok Sabha and passed also. In the Lok Sabha, Honourable Minister replied. In his reply, he said, Honourable Minister said that a need was felt to bring the bill as something was missing in the current law, and
that there was a need to have provision to ban financing for weapons of mass destruction. That is what he said in that. That means we are already having the bill. That the bill is called Weapons of Mass Destruction and the Delivery System Provision Law Act 2005. We are having that kind of bill. That is, according to the Honorable Minister's explanation in the other house, we need to change certain acts. We have to include that is very necessary. That is why he brought the bill and now we are discussing it, sir. The proposed bill focuses more on financial bit of activities supporting weapons of mass destructions and fits the missing block in fulfilling India's international obligations by adhering to the recommendation of the Financial Act Task Force and United Nations Security Council targeted financial sanctions against financing weapons of mass destruction. Sir, therefore, our government, Modi ji government has felt it necessary to include certain laws. There are so many classes already our Honorable Minister explained and given in this. But I need not necessarily go detail all those things. But the crux of the problem, what the objectives of the bill is to prohibit financing of any activities in relation to weapons of mass destruction and delivery system, empower the central government to freeze, seize or attach funds of other financial assets of economic resources for preventing such financing. Prohibit making available funds, financial assets or economic resources for any prohibited activities in relation to weapons of mass destruction and delivery systems. This is the main thing what our government feels. There our ADMK party and we are supporting this, whatever the minister has begun is a nice thing as amendments he is bringing. This is, we are wholeheartedly supporting the Modi's government bringing this kind of bill and the House to pass it. I hope all will support this bill, sir. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Sri Prakash Javadekar. माननीय उपसभापति, मुझे बहुत यह आनंद होता है कि एक सरकार ने महत्वपूर्ण बिल लाया है। दिखने में छोटा है, लेकिन इसके पीछे जो विचार है वो विचार देश की और दुनिया की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने का है। क्योंकि दुनिया ने देखा है कितने प्रकार के हमले हुए हैं, कैसी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है और कितना संकट पैदा करते हैं। अभी हमारे एक साथी उन्होंने कहा वो दुनिया में सैकड़ों लोगों को, केवल नहीं तो करोड़ों लोगों को यह आशंका है कि क्या कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन था। आशंका है। मेरा विश्वास है कि सच्चाई आज नहीं कल कभी न कभी सामने आती है, तब देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुझे पहले ही बताना चाहिए कि हमारे एक मित्र मनोज झा जी, उन्होंने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जगह, यानी उसको तो उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन इस पर उन्होंने बोला। पिछले 4 दिन से जो हम राज्यसभा में और लोकसभा में देख रहे हैं उसी को मास डिसरप्शन कहते हैं, यह हमें समझना चाहिए। मास डिसरप्शन करके डिस्कशन से भागना, इसको मास डिसरप्शन कहते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं कि बाहर कहना जाकर कि चर्चा नहीं हो रही है, और चर्चा के लिए सदैव प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा करेंगे नहीं, चर्चा के समय भाग जाएंगे, बाकी समय अंदर आके वो शोर शराबा करेंगे। यही विपक्ष की नकारा राजनीति है और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। एक के बाद एक इलेक्शन में
लोग उनको उनकी जगह दिखा रहे हैं। और आज भी मुझे खुशी है कि हमारे आज जो मतगणना हो रही है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति आज जब घोषित होगी, एक रिकॉर्ड मत से होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तैयार किया है माहौल देश के कल्याण का, दुनिया के कल्याण का, और भारत का रोल है उसमें। और इसलिए ये बिल क्या कहता है? बिल कहता है केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर। लोग कहेंगे कहां केमिकल होगा, कहां बायोलॉजिकल होगा, कहां न्यूक्लियर होगा। लेकिन ऐसा ही लोगों को पता नहीं था, कैसे कैसे टेररिज्म होगा ये पता नहीं था। अमेरिका जैसे देश में कोई मान नहीं रहा था, क्योंकि उनको वो समझते थे कि भाई वहां इतना दूर उनका देश है, चारों ओर से समुंदर है, तो कैसे टेररिज्म हमारे पर हमला होगा। मुझे याद है अटल जी प्रधानमंत्री थे, यूएन में गए थे और उन्होंने कहा किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि टेररिज्म से हम फ्री रहेंगे, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। और फिर देखा कि ट्विन टावर पर हमला हुआ। तो ये होता है, हम पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। और पार्लियामेंट का हमला, अगर हमारे 12 बहादुर जवान जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, उन्होंने अगर बचाया नहीं होता तो क्या होता, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये टेररिज्म का संकट लोगों को लगता है कि दूर है, नहीं है। एक मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे 2004 से 2014 के बीच आए दिन अब बम विस्फोट का सिलसिला देखते थे। दिल्ली में 3 बार हुआ, पुणे में 1 बार हुआ, मुंबई में 2 बार हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, वाराणसी में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। जगह जगह टेररिज्म के इतने हमले हुए कि आए दिन हम बम विस्फोट का सामना करते थे और देखते थे लोग कैसे सफर कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों को यह भी समझना चाहिए कि पिछले 8 साल में ऐसे शहर शहर में होने वाले बम विस्फोट खत्म हुए। ये मोदी सरकार ने जो नीति की, और नीति क्या की, जो इस बिल में भी है कि फाइनेंस बंद करो, वेपन्स उनको न मिले ऐसा देखो, जो उनका ओवरग्राउंड सपोर्ट है वो खत्म करो। ये जब होता है तो हमने देखा है कि माओइस्ट वायलेंस में भी जितना विस्तार था और जितनी मात्रा थी, आज 1/4 रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। इस देश से आतंक का नाम मिटेगा जब ऐसी सरकार होगी कि जो पूरी तरह से उसको काम करती है, सभी राज्यों के सहयोग से, इंटेलिजेंस का शेयरिंग करके। मैं मणिपुर में 2 बार बहुत समय इंचार्ज था, तो मैंने देखा है कैसे ही इंसर्जेंसी थी, कैसे मिलिटेंसी थी। आज खत्म हुई, लगभग खत्म हुई। क्यों हुई खत्म? इसीलिए खत्म हुई कि ये एक सरकार है कि जो एक तरफ संवाद भी करते हैं, मुद्दों को सुलझाती भी है, और जो कदम उठाने हैं कि फाइनेंसिंग बंद करेंगे, ओवरग्राउंड सपोर्ट बंद करेंगे, वेपन्स नहीं मिलेंगे ऐसा उपाय करेंगे, यही उसका रास्ता है। और ये बिल इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों की एक कमिटमेंट है कि हम, क्योंकि कोई भी टेरर बिना फाइनेंस का हो नहीं सकता। पाकिस्तान से आए दिन यहां घुसपैठी होती है, वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। कोई ना कोई फाइनेंस किए बिना मुंबई पर थोड़ा ही ना हमला होता है। तो फाइनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण है टेररिज्म में। और ये केवल केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये पॉसिबल थ्रेट्स है, प्रिएम्प्टिव स्टेप हम ले रहे हैं। आज नहीं अनुभव किया है, लेकिन कल नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। और इसलिए मोदी सरकार ने 2005 में जो सदन ने सहमति से पास किया बिल है, उसी में ये एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, एनेबलिंग अमेंडमेंट है कि भाई इस तरह के आतंकवाद के सामने
उसको कोई भी अगर मदद करेगा तो ऐसे सबके संपत्ति भी जब्त होगी, कुर्क होगी, उसको फाइनेंस कर नहीं सकते, उनको सजा भी होगी और उनको अटैचमेंट भी आएगी। तो ये यही कह रहे हैं, बिल तो छोटा है लेकिन मुद्दा बड़ा है। देश की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा, भारत की प्रतिबद्धता और दुनिया की प्रतिबद्धता के साथ हम हमारे देश में भी आतंक का समापन करेंगे और दुनिया में भी एक अच्छी व्यवस्था कायम हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। यही इस बिल का मूल है। मैं इस बिल को समर्थन भी दे रहा हूं और मंत्री महोदय को विशेष धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। Sir, this, as Javadekar ji just now mentioned, this is a very important bill which concerns the security, global security, all these aspects. And the government would like to have this bill passed with the participation of the opposition also. But unfortunately, the opposition is absent today. So I would suggest that if we wait for a day or two, and if the opposition is ready to come back and participate in the discussion, so we can take up this bill and keep it in abeyance for a day and have it on Monday again when we meet and continue the discussion and then pass the bill accordingly. Thank you. Sounds better. Sri Bandana Chavan, report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change. I'm sorry I wasn't present in the House when I was called out, but thank you for considering. So I rise to present Volume 1 in English and Hindi of the 365th report containing recommendations of the Committee on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change. Also to present Volume 2 in the languages received of the 365th report containing memoranda submitted by individuals, experts and institutions. Thank you. Sir. You will have your opportunity, Mr. Vasan. Now, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 22nd July, 2022.